Sure. Um, we were studying the Coulomb's law and electric field concepts. Okay. And as I mentioned in my last lecture, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ एप्लीकेशन हम देखेंगे, like linear charge distribution and surface charge distribution, volume charge distribution. So first thing we are gonna see कि line charge distribution क्या होती है. Line charge distribution, or some places you can see they may write like linear charge distribution. ठीक है, तो if we draw a line, ये माइक अपना क्लोज कर लें, जो भी है ये चीटिंग ऑन नॉइस हियर. अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं एंड वी अस्यूम दैट ये दिस लाइन इज लाइक दिस, ठीक है, और इस पे चार्जेस जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं. Okay, so if we divide this line into small parts like this, and we assume that the length of this line is L, ठीक है, so that small parts जो हैं उसको हम कहते हैं DL, ठीक है, and here we have charge distribution in the form of a line, ठीक है. Now this QA actually what it shows, that all the charge distribution, if we see or if we can assume that for this small part the charge will be like dq, ठीक है, छोटे पोर्शन के लिए. Now you can say lambda is equal to dq over dl. What is this lambda? Lambda is charge per unit volume, oh sorry, line, ठीक है, और line charge density. So in this case, if you see here is dq over dl, it means that charge per unit line. So charge per unit line lambda is equal to dq over dl, ठीक है, linear charge density or line charge density, this lambda. So if we have this equation over dl, so we can also write like lambda dl over equal to dq, ठीक है, and or rearrange to write like this. Okay, now if we integrate, sum up all the charges, so we can write like ठीक है, and
It means this equation will be like Q is equal to over a line. ठीक है? So over a line charge, we are integrating with the line charge. Now, we already know and we discussed in the last lecture the charge in a coordinate system. Charge in a coordinate system. Somebody's mic is open, please close it. If we draw it, the coordinate one charge is here, okay, and we are observing from any point P. This is from the origin here, x prime है और यहाँ पे x है, ठीक है, and this one will be like x minus x prime. So this is the P is the point of observation. And here you have a source. तो यहाँ पे जो charge है ना वो distribute हुआ in the form of a line. ठीक है, it's observed from point P. ठीक है, इसको हमने देखा था in the last lecture, charge in a coordinate system. So the last equation we can write like ठीक है, एक तो वन डायमेंशन में होगी, दूसरा आपका चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ यहाँ पे, ठीक है, in the form of a line. So we can write like this. We know already sorry. We know already that electric field, जो आपकी electric field equation है, so if we integrate this summation of n charges, now we integrate it. So this equation will be like okay, so this equation will be like this. Now in place of Q actually, which we already derive, Q is equal to lambda x prime dx prime here
over x prime. I close it. Okay, like this. Just a minute here. Made a little mistake. Okay, so this is your Q value here. ठीक है? For line charge distribution. So we can easily substitute this thing here. Give me 1 second, please. अच्छा, जो आपके बाकी क्लास फेलो है ना, आप उनको जरा बता छोड़िएगा कि उनकी अटेंडेंस भी जो है ना वो भी रिकॉर्ड हो रही है. So if they are taking it non seriously, वो फिर अटेंडेंस के हवाले से that can create a problem the later stages. ठीक है, आप लोगों ने कोई सीआर वगैरह बनाया अपना? सर अभी तक तो कोई नहीं बनाया, अगर कहते हैं तो बन जाते हैं सर. मैं तो आपसे काफी दिनों से कह रहा हूँ, जब भी मैं लेक्चर लेता हूँ, कि एक सीआर होना चाहिए ताकि उसके साथ कम्युनिकेट जो है ना वो किया जा सके. चलें ठीक है सर, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा लेक्चर के बाद. Okay, so here अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन को, तो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन आएगी फॉर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट वुड बी लाइक ठीक है. So what it shows actually, this is the electric field, and if you want to calculate for a line charge distribution the electric field, then you have to apply this equation. ठीक है, electric field for line charge distribution. ठीक है, उसमें लैम्डा जो है वो आपका है लाइन चार्ज डेंसिटी. ठीक है, and rest of these are equals the coordinates. इसके बाद नेक्स्ट थिंग, ये आप लोगों ने what I assume that के ये line charge, surface charge distribution, electric field and this kind of thing you people already studied maybe in a more a simple way. But we are going through here, it's a review of electrostatics. Slowly हम move करेंगे actually to actual the classical electrodynamics, the Maxwell equations. Now surface charge distribution. ठीक है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम जो डिनोट करेंगे, इसको हम करेंगे सिग्मा से. ठीक है,
और इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी भी कह सकते हो. So if we draw here, we surface and the charges are distributed over the surface. We consider a small patch. ठीक है, इसको छोटे छोटे पैचेस में हम डिवाइड कर देते हैं. We consider small patch. This is area A and the area of this small patch is dA, and the charge on this small patch is dQ, और जो overall charge distribution है that is Q. ठीक है, and surface charge density sigma is equal to dQ over dA. So that you can also say that charge per unit surface area. ठीक है. Now, if we rearrange this equation, we can write sigma dA is equal to dQ. So in this case, dQ is equal to sigma dA, and if we integrate over the whole surface, can I surf over the surface, or you can write A here. Okay. So that would be like Q is equal to sigma dA. Okay. Now in 1D, we can also write like take along x-axis or something like this. We already know the electric field equation. Okay. Electric field equation may, if we substitute this value of Q, then what we get, that is 1 over 4 pi epsilon ठीक है. So this is electric field. If you want to find out electric field, and if the charges are distributed on the surface, Sir, over, yes, how can surface charge density be in one dimension? Isn't it always in two dimensions? yeah, it is in 2 dimension, but we are only considering the, because we are considering here the, that if you go back in a coordinate system, ठीक है, in the coordinate system, if you see here, then अगर आप इसको एक surface बना लें, ठीक है, so from the origin, but we are looking from which side, ठीक है, it depends on the p, so that is why I put here x prime. ठीक है, होती वो 2D है, definitely there is no doubt about it.
लेकिन हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसको देख रहे हैं. So x is only the variation. मतलब ये कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिर्फ डिपेंड x पे कर रही है पर है तो हाँ वो जी. 2D. डेफिनेटली दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम देख रहे हैं उसको. ठीक है तो होती वो 2D ही है. ठीक. Okay, so now if we move to next application. So this is what we call actually electric field due to surface charge distribution. I see 9 students are online. So please tell rest of the students कि वो उनकी attendance जो है ना that is also considered here. ठीक है, इसको आप नॉन सीरियस लेके तो अपना नुकसान ना कर लीजिएगा. ठीक है, so you can send this message in the group. Now volume charge distribution. We have any volume. Okay. Maybe it's like a football or something like this. And charges are distributed here. These Q charges are distributed here. The volume is V, and if we divide into small patches, then the volume of one small patch is, we can say, is dV, and the charge in the small volume will be dq. Okay. So rho is equal to volume charge density. Okay. Or you can say charge per unit volume or something like this. So in this case, dq over dv is equal to rho. Okay, that is charge per unit volume. So if we rearrange this equation, what we get, dq is equal to dv, and integrating over the whole volume. So if you integrate it, then so what we get here, dq sigma dv. Okay, so that would be like q is equal to over the volume. Okay. Now same like in the coordinate system, we are observing, and the source is
is a volume charge distribution. ठीक है? So looking from one side, we can say now, like, okay. So now if we substitute this Q in electric field equation that we already know. सर इसमें dv के ऊपर प्राइम आएगा या नहीं आएगा? नहीं. Try to understand the physical significances. ठीक है? कि ये शो क्या कर रही है? ये प्राइम श्राइम के चक्रों में अभी आप ना पढ़ें. ठीक है? So electric field, if we want to electric field to find out here, इसको आप Q की जगह पे जो है वो आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो then you get. सर इसको थोड़ा नीचे कर सकते हैं, इक्वेशन रह गई है मेरी लिखने वाली. तो ये तो मैं अपलोड भी कर देता हूँ और रिकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं. एनीवे कर देते हैं. Okay. So in this case, it will be like so what this equation shows. Yes. What is volume element here? What do you mean? What is volume? dx, dy and dz ना. So तो सर x यहाँ पे मतलब एक वेक्टर है जो कि जिसके पास तीनों कंपोनेंट्स हैं. ऐसा ही है या it's सिर्फ ये एक x? we are observing it from one side. ठीक है? So that side is x-axis. है ये वॉल्यूम पूरा. ठीक है? तो कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो मैंने जिक्र किया था कल भी, उसमें आपकी ऑब्जर्वेशन जो है ना, कहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट इज वी आर लुकिंग फॉर. वॉल्यूम एलिमेंट डेफिनेटली उसमें एक्स वाई जी सारे हैं क्योंकि वॉल्यूम है ये. ठीक है? दैट इज व्हाई इंटीग्रेट ओवर द वॉल्यूम. सही. तो जब यहाँ पे इंटीग्रेशन होगी तो dy और dz वाला कंपोनेंट एज इट इज रहेगा और सिर्फ dx के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ इंटीग्रेट करेंगे. ऐसा ही. या ऑब्वियसली वो जब आप प्रॉब्लम्स देखेंगे ना उसमें आपको समझ आ जाएगी कुछ. चलिए ठीक है? ठीक है. थैंक यू. So what it shows, a electric field because of आपकी जो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है. Okay, these things were the applications of electric field. इसमें what you have seen, इसमें लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने स्टडी किया है. And then after that surface charge distribution and at the end जो है वो आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. Now if we move further, field lines. You people already know that जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं आपकी. So in case of positive, it's going outward. ठीक है? In case of negative charge, going inward. ठीक है? So if like one is positive and one is a negative charge there, so these lines will be like
assume if we have QQ positive charge and 1Q is a negative charge. So definitely field will be stronger on this side. So it will be like so. Similarly, if we have like 3Q, 4Q, that field will be stronger. And we can also have minus 2Q, minus 3Q or something like this. So these are electric field lines. So electric field line concept is necessary to understand जब आप flux को study करते हैं, that is electric flux. So what is electric flux? The number of field lines passing through an area. Yeah, I'm not asking actually, just asking to myself. Okay, so electric flux, I assume you people already studied. Okay, number of lines passing through an area. Okay. And this flux is depending on the normal of the surface. Okay. So how do you define it? You already know. I mean, you people studying this from FSC maybe, or from O levels or something, A levels. Number of lines passing through an area A, any area A. Okay. And if this area A, and we draw it, this is the normal of the area. Okay. इसमें से एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है. Can so these lines are showing the electric field lines. Okay. So these lines making certain angle with the normal vector. Okay. So that would decide कि electric flux maximum है, minimum है, whatever. क्या एंगल आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नॉर्मल के साथ बना रही है. ठीक है. फ्लक्स को इलेक्ट्रिक फ्लक्स को we write like this. It's a dot product of electric field and area. ठीक है. And flux itself is a scalar quantity. अगर हम इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें तो that would be like cosine theta. So this theta is very important here. ठीक है. So if there is an area and a certain area, an electric field is passing through. So I have to see what angle this electric field is making with a normal vector. Okay, so if here in the last equation,
theta 0 degree. ठीक है? So it means that electric field and normal vector like this. ठीक है? So what will happen? Cosine theta in this case is equal to 1 and you have phi is equal to EA. And that would be the maximum flux. अगर थीटा यहाँ पे 90 degree हो, so what will be cos theta? That will be 0. ठीक है? और that is minimum flux. ठीक है? इस सूरत में like if you have this any area, this is a normal and electric field is passing through like this. So in this case, minimum field will be passing through or maybe no field passing through. Okay. Some other possibilities are also there. Some other possibilities like if this surface area is making certain angle. Okay. And an electric field is passing through like this. So इस सूरत में that would be a certain angle. That will also, I mean, that can be calculated. कि कितने परसेंट पल्स जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो पास होगी. We put this value and find out the cosine theta. This is electric flux. Why do we need to know about electric flux? You people already know that. कि Gauss's law जो है, that's one of the important law you can say. तो उसको समझने के लिए और किसी भी एरिया से किसी भी वॉल्यूम से को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा. ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन. क्या एंगल है नॉर्मल का विद इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ let's suppose we have any area A. And this area is divided into small parts or patches. Okay. Let's assume we take one patch. Okay. Normal on this patch. And the area of this patch is dA. Okay. After that, we can apply integration over the whole surface. Okay. And we will use the integral in this form. Means closed surface.
Now we know phi is equal to this one. Okay. And if we integrate over the whole surface, you can write like normal vector. Here you can also write in this form. There's no doubt about it. Okay. Now I call this equation A. Okay. The flux, total flux over a closed surface. Okay. Now we move towards the Gauss's law because we need this equation in the Gauss's law. So Gauss's law actually is a special case. Okay, so we call it like charge is enclosed in a closed surface. Okay, so flux can be written if we use a summation sign. If sum up, if the patches are not very small, I call it equation B. Okay. Now if you compare first, we have to see the equation of flux, which is A. Okay, integrating. And now we are discussing the Gauss's law. So what it says, charge is enclosed in a closed surface. ठीक है, charge is enclosed in a closed surface. और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे. ठीक है. Flux can also be written like this. ठीक है. Q over epsilon naught. So epsilon naught is like, you know, already it's a free space. ठीक है, ये charges Q are the charges. Now if we compare this equation of flux and this equation B, so what will you get here? Okay, so it can be like so charge is equal to this integral for a closed surface where the electric field is also existing. इस form को what we call is Gauss's law of electric flux. Okay. Now, if we have this equation, or we know already
Q जो है that is equal to dV, that is for volume charge distribution. So that volume charge distribution, the value of Q, we can substitute in the last equation. We call it equation C. यहाँ पे we can write like this, ठीक है. अब इसमें ये है कि ये वॉल्यूम है, ये आपकी सरफेस है, and this one is free space. If it is not free space, then it has to be like epsilon, that will be inside the integral. Okay. Like so in the medium, like this, and equation will be or we can write like so what this thing is showing is very important. Epsilon naught E, that is D, which is called electric displacement vector. Okay. Electric displacement vector. So when we study the Maxwell equation, this thing is very important in that equations. Okay. So in the medium, we are in the medium. ठीक है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी मीडियम में मूव कर रही है, ठीक है, नॉट इन अ फ्री स्पेस. तो इसको हम डी से लिखते हैं, विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन अ मीडियम. ठीक है. सो लास्ट इक्वेशन कैन बी so last equation we can write like this. अब इसमें what do you see? D is equal to epsilon naught E. What is the physical significance of this D? Anyone can tell me? कि यहाँ पे D जो है displacement vector, what is the physical significance? क्या बता रहा है ये? Anyone?
Electric field inside medium. Okay, but what else? ये तो पता चल ही जाता है, but what else? और डायरेक्शन दोनों की सेम. No. This displacement vector actually इलेक्ट्रिक फील्ड किसी मीडियम में, ठीक है, और this epsilon naught here which is depend on the medium, कौन सा मीडियम है, ठीक है. It has information about material, medium, ठीक है. So what kind of material or medium it is? On the other side, not on the other side, I mean electric field, what did it tell you? It doesn't have any information, ठीक है, about medium, about material, nothing. This electric field is just a push. So this, in other words, this electric field is pushing the information, which is carried by epsilon naught. इसको displacement vector कहा गया, ठीक है. So epsilon naught is having a information about the material, about the medium. An electric field doesn't have information. Electric field इस information को push कर रही है, ठीक है. And electric field is pushing this information. वो आगे तक पहुंचाएगी इस information को. When it moves, electric field, तो dynamics है ना, so when it moves, तो वो जो आपकी मटेरियल की या मीडियम की इंफॉर्मेशन है उसको पुश कर रही है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रही है. So this is the physical significance of vector D, which will be used a lot when we study the Maxwell equations. ठीक है. और यहाँ पे in this equation certain volume, एक certain volume है, and volume is not free space, ठीक है, वो एक मटेरियल है, कोई मीडियम है, ठीक है. वो मीडियम कोई गैस भी हो सकती है, कोई सॉलिड भी हो सकता है, एनीथिंग. सो इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है. सो व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज पासिंग थ्रू, इट पुशिंग द इंफॉर्मेशन के व्हाट काइंड ऑफ मीडियम इट इज, ठीक है. इस इंफॉर्मेशन को वो आगे पुश कर रही है, ठीक है. सो दिस इज बेसिकली one of the important thing as I mentioned before. और we concluded this thing from the Gauss's law, ठीक है. इस इक्वेशन को हम
डेफिनेटली बाद में मजीद भी स्टडी करेंगे. सो फॉर टुडेज आई फिनिश हियर. ठीक है, आई कंक्लूड हियर. और रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो है इसके बाद जो आएंगी, probably that is more interesting physical significance के point of view से, so that we also discuss. So definitely this lecture is recorded. You can watch. There may be some permission which I will see the setting. और जो मैं पढ़ाता हूँ उसको मैं अपलोड भी कर सकता हूँ, नॉट कर सकता हूँ, करता हूँ. And we can definitely, if you have any problem somewhere or something like this can be discussed. और अगर आज के आपके जो लेक्चर है, इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, और अगर आप मैं आपकी कोई कन्फ्यूजन दूर कर सकूँ तो यू कैन आस्क. ठीक है, तो इफ़ यू हैव एनी. दूसरी चीज़ मैंने आपसे कही थी कि अपना कोई CR बना लें जिससे मैं कम्युनिकेट कर सकूँ. ठीक है, क्योंकि क्लास जो है वो अभी लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 class is not attending. Sorry, students are not attending these classes seriously. ठीक है, और अगर वो सीरियस नहीं है तो फिर उनको मसला होगा बाद में. ठीक है, बिकॉज आई विल कंसीडर डेफिनेटली द अटेंडेंस, और क्लास पार्टिसिपेशन भी हो सकता है मैं ऐड करूं जो आपके फाइनल ग्रेडिंग जो होगी. ठीक है, तो आई एम टेलिंग यू अगेन, एंड कि आप अपना कोई CR बना लें. ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप आपको ऑलरेडी है, एंड यू पीपल ऑलरेडी नो अबाउट मुदस्सर. ठीक है, वो TAS कोर्स का, उससे भी आप डिस्कस कर सकते हैं. अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो उसके पास भी आप जा सकते हैं, लेकिन अपना एक CR बना लें जिससे मैं कम्युनिकेट कर सकूं, और ताकि स्टूडेंट जो है वो क्लासेस रेगुलरली लें जब तक ये ऑनलाइन मैं पढ़ा रहा हूँ. बाद में भी डेफिनेटली, बट एट द मोमेंट, क्योंकि यूजुअली स्टूडेंट्स का एक एटीट्यूड है कि वो ऑनलाइन क्लासेस को सीरियस नहीं लेते. ओके, सो इफ यू हैव अ क्वेश्चन regarding today's lecture, you can ask. ठीक है, otherwise yeah. सर हमने जो स्टार्ट में अभी आप बता रहे थे कि हम एक डायरेक्शन में देख रहे हैं ये सारा कुछ 1D के हिसाब से, तो उसकी कोई ख़ास रीज़न है? हमने उसको वैसे ही एक 3 डायमेंशनल वेक्टर लेके पूरा देखें उस आप हिसाब से क्यों किया? पहले पहले आप जो पढ़ते रहे हैं ना वो एक सिंपल केस पढ़ते रहे हैं. ठीक है, इसीलिए मैंने वो लेक्चर में वो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ना उसको इंट्रोड्यूस किया था कि हमारे सामने एक बॉडी पड़ी हुई है. ठीक है, उस बॉडी को ऑब्जर्व कहाँ से किया जा रहा है. ठीक है, दैट इज व्हाट दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम्स आर टेलिंग. ठीक है, पहले जो इससे पहले आप पढ़ चुके हैं वो तो सिंपल जो है ना वो उसमें हम कोऑर्डिनेट को डिस्कस नहीं करते. सिंपल इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में जो पढ़ते हैं इसमें हम कोऑर्डिनेट ले रहे हैं. ठीक है, आप कहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस और इसकी जो इम्पोर्टेंस आपको मिलती है, वो आप जब कोई प्रॉब्लम इससे रिलेटेड आए तो उससे आपको ये अंदाज़ा ज़्यादा होता है. लेकिन अगर आप जैक्सन की बुक आपके पास है, जैक्सन की बुक को अगर आप खोलें ना, तो क्योंकि ये जैक्सन की बुक ही मैं 100% तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक वही फॉलो कर रहा हूँ. सो जैक्सन इज आल्सो एक्सप्लेन दिस काइंड ऑफ थिंग्स, और इसीलिए कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमने स्टडी करके तो कोऑर्डिनेट के हिसाब से ही हम बाकी चीज़ें जो है ना वो देख रहे हैं. ठीक है, दिस इज द रीज़न. और सर इसको आप एक सिंपल, कोऑर्डिनेट सिर्फ क्यों देख रहे हैं हम, बाकी 2 जो हैं साथ वाले वो क्यों नहीं देखते? वी डोंट नीड टू, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सिंपल थिंग. ओके, अगर आप फिजिसिस्ट हैं तो पहली चीज़ आपने ये पढ़ी होगी, आपको किसी ने बताया होगा कि हमेशा हम सिंपल से शुरू करते हैं, ओके सर, कॉम्प्लिकेशन को बाद में इंट्रोड्यूस करते हैं. ठीक है सर। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द रीजन. ठीक है,
एक्सक्यूज मी ओके सर। हाँ जी सर आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में ये बात की है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस इंफॉर्मेशन को, मटेरियल की इंफॉर्मेशन को पुश कर रहा है जो एप्सिलॉन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है जी। तो सर इस चीज को थोड़ा सा और इलैबोरेट कर सकते हैं कि मतलब कि इसको जब इलेक्ट्रिक हम फील्ड के पुश करने नहीं जब हम मैक्सवेल पढ़ेंगे ना उसमें इसको ज्यादा एलैबोरेट किया जाएगा, अभी इतना ही है। ठीक है, और अगर चलो ठीक ये है। जो यूज होगी ना, जहाँ भी यूज होगी उस पे। हाँ जी कौन? सर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ऐसे भी तो कहा जा सकता है ना कि जब एप्सिलॉन नॉट, जब आप कोई इसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कराते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पेयर्स को पुश करती है, तो जो डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होती है फिजिकली हम उस डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे होते हैं। ये उस डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है और ये देखें, वो इंफॉर्मेशन इट प्रोवाइड इट करेगा। डिपेंड्स इट डिपेंड्स कि आप किस मतलब तरफ से इसको देख रही हैं। ठीक है, अ, जो आपका क्वेश्चन है दैट इज 100% तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन पार्शली इज ओके। लेकिन अगर हम कम्युनिकेशन के हवाले से देखें, ठीक है, कम्युनिकेशन के हवाले से, आई एम नॉट गोइंग टू माइक्रोस्कोपिक स्केल, तो कम्युनिकेशन के हवाले से जब हम देखते हैं ना, तो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और आपकी मैग्नेटिक फील्ड कोई इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं ना, ठीक है, मैं यहाँ पे उस हवाले से कह रहा हूँ। ठीक है, वो आपकी इलेक्ट्रॉन और वो प्रोटॉन के हवाले से जो आपने किया दैट इज पार्शली ओके, जब हम माइक्रोस्कोपिकली देखें तो। ठीक है, मैक्रोस्कोपिकली देखें तो इसका जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो इंफॉर्मेशन कि वो मटेरियल है क्या। ठीक है, उसमें सिग्नल भी आ जाते हैं, एक्सक्यूज मी, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, जो आप कह रही हैं, मैं आई एम नॉट डिनाइंग, वो आपकी इंफॉर्मेशन जो आप बता रही हैं दैट इज आल्सो रीजनेबल। ठीक है, ओके सर। ओके ओके। सो आप में से कोई मुझे कह रहा था कि बाद में बात करेंगे वो सीआर के हवाले से। Who was that guy? सर मैं आसिफ रजा से बात कर रहा था। हाँ जी, तो आप सर यही के ग्रुप हाँ जी बनाया हुआ है मैंने, तो आज मैं सबको अनाउंस कर देता हूँ सीआर के हवाले से, और जो जो स्टूडेंट लेक्चर नहीं ले रहे उनको मेल भी कर देते हैं आउटलुक से कि आप अगर सीरियस हैं तो लेक्चर लें, वरना आपके जो नंबर हैं वो यहाँ से डिटेक्ट होंगे। डेफिनेटली। तो आप ही जी सीआर होंगे इनके अब। जी ये सर। आप फैसला कर लें आपस में। ठीक है, जी फिर सर। एक बंदे के थ्रू कम्युनिकेट करना मुझे आसान हो जाता है, क्योंकि क्लास अगर 15-16 बच्चे हैं क्लास में, तो वो जी सबके सर। साथ तो बेहतर है कि अगर एक सीआर हो तो आई कैन सर हमने कम्युनिकेट विद हिम। क्वांटम की क्लास में इकट्ठे होने सकते हैं, तो हम वहाँ पे डिसाइड कर लेंगे कि कौन होगा इसलिए। ठीक है, ठीक है, तो वट एवर यू विल डिसाइड, आई मीन पीपल कैन लेट मी नो। ठीक है, सो आई विल वाइंड अप द क्लास। ठीक है, साइनिंग ऑफ नाउ, लेट्स सी ऑन द नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीक। ठीक है, दूसरा ये कि मुदस्सर से आप इन टच रहें। मेरी गैर मौजूदगी में वो आपका लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, अगर कोई मसला भी है या वट एवर इट इज़, तो क्योंकि उसके साथ मेरी कम्युनिकेशन जो होती रहती है। ठीक है, ठीक है, ओके, फिर अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।